Hello, and once again, welcome to the third class of the 10-day program. So this was a modified timetable. Instead of starting at 5:30 or 6:30, we are starting at 5:30. Henceforth, all the remaining classes will be in this time schedule, 5:30 onwards. Welcome, Pranav from Jajpur. Okay. Welcome, Harshita, Samidha. Let me share my screen. Yes. So we are also joined by, oh, of course, Ayush was already there. Okay. Do you have any doubt, Rudra and Ayush, Harshita? Excuse me, sir. Yes, Ayush. Sir, ଆପଣ ଯୋଉ question ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କର question number 12 and 19 ଟିକେ ବୁଝେଇଦେବେ। କ'ଣ balancing ଟା? ଆଜ୍ଞା sir। Okay. ମୁଁ ତ balancing ସବୁ ON method ବି ସବୁ discuss କରିନି, EBD method ଟା discussion କରିନି। 12 ନା? ଆଜ୍ଞା sir। 12 ଟା ହେଲା zinc and nitric acid ସେଇଟା ନା? ଆଜ୍ଞା sir। Okay, okay. ଆଉ କୋଉଟା? 19 number। ସେଇଟା କରିବା, ଆଉ କରିବା 19 number, ସବୁ କରିବା 19. Okay, we'll do that. We are now joined by Sejal was there, Ashish Tripathi from Puri. सर मोर भी दीटा डाउट थिला। Sejal, को सर 7 नंबर और 9 नंबर टा वाह, 7 ହେଲା ଏ जो सोडियम मेटाफॉस्फेट नहीं? यस सर। ओके ओके। सर जो फर्स्ट कंपाउंड तार माने NAP गोटे माने कंपाउंड मिसी के जे या फिर O3 अलगा ताको जदी भांगीबा ताल दिटांग जो कंपाउंड बे से दिटा कोन? ओके, आउ कोन कहलो 7 आउ कोटा 9। ओ 9। तबे कोटा एबे कोटा मो संगे कथा कहउथलो 7 टा ना 9 टा? तो 7 टा। Okay. So let me begin today's program with Sejal's question number 7. Are you able to see my screen? यस सर। Yes? Yes or no? Yes sir। Yes, यस सर। Yes sir। Okay. Now this is an easy equation to handle or to balance. Here, the changes are from the element bromine and the element oxygen. Phosphorus is in the +5 state here.
also +5 state here. So phosphorus is not our guest. This is not our guest of honor. The guest of honor is oxygen, -2 becomes 0, and bromine is +3 because fluorine is always -1. So bromine is +3 and here it is 0. So change in ON for bromine in BrF3 is 3. And since it is reduced, it is oxidizing agent or oxidant. And this is oxidized, this is reducing agent or reductant. So the change of OA is, total change in OA is 3. So 3 to be multiplied as coefficient with RA. And the change in RA, who can tell me what will be the total change in RA? Oxidation number. Yes, raise your hand. What is the total change in oxidation number in the RA? Rudra? 6. Precisely. देखो गोटे atom पाई it is 2 -2 to 0. आपको देखो नहीं. एठी केतेटा atom अछि, we don't bother. For reactant side, one oxygen atom, the change is 2. -2 -0, take the mod 2. So 2, there are 3 oxygen atoms. So 2 into 3, 6. 6 is to be multiplied here. Then you are done. You are done. Since there is 6 bromine, so you have to do 3 here. So there are 3 phosphorus, you have to make 3 here. This is simple heat and trial inspection method. Then there will be how many oxygen? 3 3s and 9 oxygen. 3 3s and 9 oxygen. Here we have to make 9 by 2. At the first instance, you should start with the fraction. But ultimately, you have to remove the fraction while solving the final balanced equation to the teacher or in the examination. You have to remove the fraction. So to have 9 oxygen, we have to make the coefficient of O2 9 by 2 because it's all n by 9 by 2 into 2, that becomes 9. 9 by 2 into 2 because one molecule contains 2 atoms. So we will see now the other atom. Sodium 3 3, fluorine, the other atom was fluorine. 6 3s are 18. Here also 6 3s are 18. So this is a balanced equation, but we have to eliminate fraction. Since we have to eliminate fraction, we have to multiply the entire equation by 2. So that this becomes 6 NaPO3. This becomes 12 BrF3. This becomes 6 NaPF6. This becomes 6 Br2. This becomes 9 O2. Again, you cannot solve unless the coefficients are simplest. So a factor 3 is there to reduce the coefficients to simplest whole numbers. So if we divide the entire equation by 3, then this becomes 2 NaPO3, this becomes 4 BrF3, this becomes 2 NaPF6, sodium hexafluorophosphate. Forget about the name now. You handle the equation. No need to write. Know the names of all the compounds and ions at this moment. 2 Br2 plus 3 O2. So final, this one you will solve. You will get full mark. You can't make it 6 12, 6 6 9. It is not simplest. A factor 3 is there to reduce the numbers. And you can't solve with a fraction. You have to eliminate fraction by multiplying the entire equation by the denominator of the fraction. I hope Cecil and others understood, right? सर मो क्वेश्चन टा थिला कि जो रिएक्टेंट वाला रे जो ऑक्सीजन आपण ऑक्सीडेशन नंबर काढिले तार सेटा काढिले केमति -2 हैला केमति सेटा टी देखिबे. अरे रूल नंबर हमर तो रूल नंबर 1 2 रे अछि ऑक्सीजन ऑलवेज हैज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ -2 एक्सेप्ट पेरोक्साइड रे -1 सुपर ऑक्साइड रे -1
OF2 रे +2 and O2F रे +1 सेटा Okay, sir. they are normal oxides in the logic is they are normal oxides in peroxide no peroxide has a special flavor smell tar smell अलगा आसीबो जणा पड़ जिवो हैला Yes, sir. Thank you, sir. वेलकम तोर तो सरी नहीं एते शीघ्र थैंक यू भल अछि सर थैंक यू जेते कहबो इंग्लिश माने हमको सिखै छन हम आगुर कहू नथु इंडियंस माने बहुत एटिकेट गुड मैनर्स से माने सब इंग्लिश माने सिखै छन प्रणव बुझिलो तो प्रणव प्रणव Yes, sir. बुझिलो अच्छा आउ ये जो कहिची यार गोटे नौची हूँ क्वेश्चन नंबर 12 दिस इज आयुष पचार एटा तुमको आउरी भल लागिबो आज जेतेबेले हमें पढ़िबा आज जेतेबेले पढ़िबा आयन इलेक्ट्रॉन मेथड सेतेबेले तुमको आउरी भल लागिबो तुम कहबो से टोका किए पचारथिला हां आयुष बोधे ये काहे कि आयनिक इक्वेशन टा कोन दरकार आस्ते आस्ते निजे कहबो कोन दरकार तेल आज आयनिक इक्वेशन जेतेबेले पढ़ा हबो हाउ टू हैंडल एंड बैलेंस इट कहबो अच्छा एटा गोटे मॉलिक्यूलर इक्वेशन तुमको जानिबा पड़िबो कोउटा ऑक्सीडाइज कोउटा रिड्यूस्ड कहि परिबो कि केते रु केते को ऑब्वियसली जिंक टा 0 रु +2 को समस्ते कहि परिबो एवरीवन इज क्लियरली looking at the fate of zinc what has happened to zinc but tell me what has happened to nitrogen in nitric acid in the left side and maybe ammonium nitrate in the other side rudra कहलो Sir, nitric acid रे +5 ଅଛି ଆଉ ammonium nitrate रे ଅଛି -3. precisely ମୁଁ ଆର୍ଥରକୁ କହିଥିଲି ସମିଧା and others that ammonium nitrate हो या ammonium nitrate हो आपको 2 times निकालना पड़ेगा ऑक्सीडेशन नंबर नाइट्रोजन का क्योंकि एक नाइट्रोजन कैटायन पॉजिटिव आयन में है NH4 प्लस में the other nitrogen is present in the anion negative ion NO3 minus so the कैटायन का जो है नाइट्रोजन इसका ऑक्सीडेशन नंबर -3 so +5 रु -3 को चेंज हेछि ए नाइट्रेट आयन टा डाण पटे जिंक नाइट्रेट रो नाइट्रेट आयन टा is a spectator and ammonium nitrate रो nitrate ion टा spectator तो आयनिक इक्वेशन जदि लेखा जीवो आ टिके परे मु करबी आकु ही करबी आमे नाइट्रेट आयन टा राइट साइड रु पूरा पोछि दबा किंतु नाइट्रेट आयन टा हीरो नाइट्रेट आयन एक्सेस किछि नबा आमे वर्तमान नबा डेफिनेटली एमान को सैटिस्फाई करिया पे आमे मॉडिफाई करिवा किंतु हमर जो कोएफिशिएंट जिंक रो फिक्स हे जीवो की कहि परिबो +5 रु -3 व्हाट इज द चेंज in oxidation number Sir, 8. precisely so viewers from outside they possibly could not get the time modification so they will be joining late okay so +5 to -3 the change is 8 so 8 is to be multiplied with zinc and नाम के वास्ते जिंक टा 0 रु गला +2 को चेंज हला 2 ये हला 8 नाम के वास्ते कारण गुडा बेकारिया अलिया अछंत सो ठीक अछि किंतु हमको जो जिंक रो कोएफिशिएंट टा फुल एंड फाइनल मिली गला that is 8 so you have to multiply by 8 to make the zinc equalize on both the sides now looking to that is the trick here the hero marker nitrogen is 2 so here the hero marker nitrogen is only 1 so you have to multiply by 2 here before adjusting for the spectators because these two nitric acid are responsible to produce ammonium ion which is the real hero in the product side and there is only one nitrogen is in ammonium ion so there will be 2 ammonium ion which will be produced from 2 nitric acid एतक कला परे वर्तमान हमकु जळ जळ करी दुसिबो जोडाक अपृष्ठे बहुवासते मूढ़ चेता नराधम कोन गोटे संस्कृत श्लोक अछि
कौन जो मान को डकरा नही से माने आछंती कोन गोटे भोजी को बहुत लोक पशि आसंतनी डकरा नहीकरी इनविटेशन ना किंतु पशि जाइथिबे तो सेही भलिया ए जो स्पेक्टेटर्स माने और किछि काम नाही से माने किंतु अछंती तांको तो पुणी हमको खाइबा को दବାକୁ पड़िबो पळि आसंती माने हम खाइबा को दବାକୁ पड़िबो तेणु एपटे टोटल नाइट्रेट आयन एठी 8 2 जा 16 एठी 2 नाइट्रेट आयन सो 18 टा नाइट्रेट आयन आमर एक्सेस अच्छी एज स्पेक्टेटर इन राइट साइड सेटा कोठु आसीबो सेही नाइट्रिक एसिड दबो एई जो दीटा नाइट्रिक एसिड एटा हीरो मार्क अमोनियम आयन को तयारी करिया पई किंतु एठी 18 टा मॉलिक्यूलर इक्वेशन रे एक्स्ट्रा आसिलानी तो 18 युक्त 2 समान 20 सो ये 2 को काटिबा तापर 20 करबा माने 20 माने 20 and then we have to balance hydrogen 20 टा अछि एटी ऑलरेडी 4 दुने 8 टा अछि 20 minus 8 is 12 so you have to make it 6 now you check with oxygen 12 3s are 23s are 60 oxygen and this side 3 2s are 6 6 8s are 48 and this is 3 2s are 6 and this is 6 this is also 60 so this is a balanced equation but you cannot solve when it is hot it is extremely hot I mean it has to be reduced so what factor to be divided Sir, 2. so 2 रे divide कले एटा हे जीवो 4Zn एटा हे जीवो 10 HNO3 एटा हे जीवो 4 zinc nitrate एटा हे जीवो गोटे 1 ammonium nitrate एटा हे जीवो 3टा पानी are you able to understand Mr. आयुष ना किए पचारथुला आयुष तो yes sir बुझिलो समस्ते बुझिलो yes sir सिजल Yes, sir. बुझिलो सिजल Yes, sir. समिधा Yes, sir. and others तो निश्चय बुझते वर्षिता Yes, sir. okay एबे गुटे हमें जीवा electron balance diagram why I am harping more on this because एटारे confidence न आसिले तमे stoichiometry कर परिबनी भूल भाल हे electron balance diagram एटा गुटे invincible weapon belonging to the ON method बा EBD मेथड जिते बड़े साधारण वेपन्स गुड़ाक एटा AK-47 तुम जो साधारण गोटे बाड़ी रे गोटे तुमर एनिमी को घायल कर देकी पकई दे न पारल गोटे सिंपल स्टिक रे then you will take ultimately AK-47 invincible weapon where you will kill the enemy means balancing the equation so सेटा कहा पा यूज वे दीटा पाई गोटे होची डिस्प्रोपोर्शनेशन बा ऑटो रिडॉक्स रिएक्शन और ऑटो रिडॉक्स सही कंपाउंड रे गोटे एटम ऑक्सीडाइज होथिबे गोटे एटम रिड्यूस होथिबे और सही एलिमेंट ऑक्सीडाइज रिड्यूस होथिबे एंड रिएक्शन कंटेनिंग मल्टीपल ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जदि गोटे जेमती तमे मिस कृष्णप्रिया जेमती भूल रे भाबिथिलो दीटा ऑक्सीडेशन ना दीटा रिडक्शन अछि बोली कहउथिलो प्रकृति रे जदे जदि देखिबो गोटे रिएक्शन इक्वेशन रे मल्टीपल 2-3टा अछि ऑक्सीडेशन की गोटे 5टा अछि रिडक्शन मल्टीपल ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अवश्य मिनिमम प्रत्येक रु गोटे लेखा रहिबो किंतु जदि प्रत्येक रु 3टा गोटा करू रिडक्शन रु गोटे अछि ऑक्सीडेशन 3टा जगह रे कि रिडक्शन ऑक्सीडेशन गोटे जगह अछि रिडक्शन 3टा जगह रे अछि सेउडा को तुमे आ मन अवश्य तुम जदि अंक रे मास्टर ताले से मन को मन करि परिबो बट इट्स नेवर टू बी डन बिकॉज़ तुमे स्टोकियोमेट्री फार्मूला रे मेंटेन करबा को पड़िबो दीटा काम फार्मूला रे स्टोकियोमेट्री मेंटेन करबो एट द सेम टाइम तुमे मल्टीपल केते टोटल केते चेंज हला देखिबो टोटल चेंज देखिबो एज वेल एज
stoichiometry in the compound has to be maintained. No example दे दूँ तुमको. धरो example 1, chlorine plus NaOH. मु molecular equation रे अच्छी. मु एपन तो ionic equation को आसीनी. Ayush is very interested. Sodium chlorate plus sodium chloride plus water. तो एटा को हमें बैलेंस करबा हिट एंड ट्रायल रे तुमको असुविधा लागिवो कारण सेम क्लोरीन टा 0 रु +5 को जाईची सेम क्लोरीन टा 0 रु -1 को जाईची सेति पई तमे ईबीडी मेथड अप्लाई करिया पड़ियो कोन इन ईबीडी मेथड यू सिंपली राइट द एटम and its oxidation number in the left side, not the molecule, atom only. And that, supposing you take, let's say first, let us take oxidation step. In the oxidation step, chlorine 0 has been converted to chlorine +5. Only extract the atom, not the molecule or the ion, simply the atom and its oxidation number. And then balance the charge. You add electron in such a manner that the two sides will have identical charge. Tell me how many electrons are to be added in which side so that the charge will be equal. Make sure that electron is negative. Add karibo E, kintu tar charge wise it is -1. Yes, Ayush? Sir, 5 electron in right side. Huh? 5 electron in right side. Precisely. आमे जदि right side रे 5टा electron add करिबा, so this is +5 and -5, 0 as जाउची and left hand side रे भी 0 अछि. So electron ता ना सेति पे electron balance diagram. Atom टी लिखिबो तार oxidation state लिखिबो एवं electron add करिबा. You know oxidation is the loss of electron and electron टा right side रे आसीबो positive sign रे. ए बाँ पट को नहीं गले हेटा नेगेटिव साइन हे जिवो बहुत बही रे नेगेटिव साइन देई थाए लेफ्ट साइड रे मते भल लागे राइट साइड रे प्लस पॉजिटिव साइन रे एंड रिडक्शन सेम क्लोरीन टा 0 रु जाईची -1 को एंड हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स टू बी एडेड यस को समिता कितना इलेक्ट्रॉन ऐड होबो Sir, 1 electron in left side. yes 1 electron in left side. So this is over, that is over. The individual steps are over. Then you have to cancel electron. एथरे electron टा right रे अछि, एठी electron left रे अछि. So you have to multiply this second equation whole by 5. So that 5 electron get cancelled. And then you add up all the species in the left side and right side. So 5 chlorine 0 and 1 chlorine 0. Total becomes 6 chlorine 0 gives rise to 1 chlorine +5 and 5 Cl -1. So this is what we call the EBD, the electron balance diagram. That will give you the most important clue to hit on the molecular equation. We need 0 marker chlorine 6 in number. So what coefficient we have to multiply to the molecule chlorine? We need 0 marker chlorine 6. 6 number of 0 marker chlorine atom we need. So it kete multiply kariya padibo 3. 3 2s are 6. And in the right side we need only 1 + 5 marker chlorine. So it is already there in 1 sodium chlorate. And -1 marker chlorine we need 5. So we have to make the coefficient of NaCl5. तो इथरे advantage कौन ना both left and right रो coefficient हमको मिल जाउची both left and right किछि किछि coefficient जोड़ा main coefficient मिल जाउची तापरे बाएं हाथ का खेल टोटल सोडियम हैला 5 एठी 5 एठी 1 6 तो एठी 6 मल्टीप्लाई कर देले हे गला काम देन हाइड्रोजन एठी 6 एठी 3 कर देले हे गला तो किते घोषिबो 3 6 पिला माने घोषंती 3 6 1 5 3 it is na घुसिबो गोटाए एमती thousands of equation तुम घुसतु. So this EBD is to be applied for disproportionation reaction, auto redox reaction, sometimes
आउ जोड़ा को छोटो ऑटो रिडॉक्स रिएक्शन ताकू हीट एंड ट्रायल रे भी कर देले हे जीवो एटा बुझिलो किए बुझिलो हते को सर गोटे डाउट रहला से जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन पर से 6 क्लोरीन 6Cl0 ए जोटा काढले सेटा केमती काढले कोडा सर जोटा ये तो गुट्टी टाइप रो जंतु ना जीरो मार्का क्लोरीन ऊपर भी अछि ऑक्सीडेशन स्टेप रे आ जीरो मार्का क्लोरीन रिडक्शन रे भी अछि 5 गुणिला परे सेटे 5टा 5 हे गला सबुतरे 5 5 गुणिबो होल इक्वेशन रे 5 गुणिच माने एटा 5 ये 5 बुझछो ना नहीं यस सर एठी 5 एठी गोटे मिसिले टोटल जीरो मार्का क्लोरीन केते हला शीतल केते हला ता आउतर कहबे कोन आउतरे कहमो जीरो सब there are two steps oxidation and reduction oxidation steps involves 1,0 type chlorine and reduction step involves 5,0 type chlorine so altogether when you add up identical species then how many 0 type chlorine will be there in LHS 6 and plus 5 type chlorine is something different you're right it is only one and the -1 type chlorine is 5 so 5 so this is called EBD and looking to the coefficients in the EBD you handle the molecular equation you have 6 0 type chlorine so you have to make the coefficient of chlorine which is a diatomic molecule as 3 and plus 5 type chlorine there is 1 here so there is nothing to be multiplied in the sodium chlorate formula and -1 type chlorine there are 5 so 5 to be multiplied with NaCl after doing this the next job is to apply the heat and trial method to balance it you got it yes sir now ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ ଦେଇଥି ସେଠି କରିବାକୁ ତମେ ଦେଖି ନଥିବ ଆରଥରକ last yesterday I told you so, a paradoxical case in this fool's gold or iron pyrite so this is एठी कौन चेंज है ऑक्सीडेशन नंबर के कोई परिवो hello anybody watching directly from the online live streaming YouTube live streaming program please write down in the chat box but the YouTube is not showing that there is any viewer but the average view duration has been 27 minutes 53 seconds I think we have covered that many minutes welcome if you are watching or you are watching later welcome and enjoy what we'll be doing in another maybe half an hour or maybe 45 minutes today I will be restricting our program to max 6:45 so what is the oxidation number क्या yes कहलो आउ क्या आयुष कहलो sir iron oxidation number +2 to +3 yes मु कहिथिली एटा डाइसल्फाइड अंडर पॉलीसल्फाइड कैटेगरी +2 रु एठी वाला +3 को and oxygen रो 0 to -2 ऑक्सीजन रो 0 to -2 एठी करो जोठी हो आउ सही तो कथा रुद्र सर सल्फर टा 1 - ରୁ +4 कौन केते रु -1 -1 रु +4 मु बारंबार कहिची दे एटा डाइसल्फाइड S2 2 so the oxidation number sulfur per atom is -1 S2 2 -
So 2x is equal to minus 2, x is equal to minus 1. So sulfur oxidation ହେଇଛି ଇଆଡେ iron oxidation ହେଇଛି ଦିଟା oxidation sorry ଆଉ ଗୋଟେ reduction oxygen ର କେବଳ ହେଇଛି reduction किंतु दीटार ऑक्सीडेशन आयरन +2 रु +3 सल्फर -1 रु +4 तेणु ताकू जदि गोटे डायग्राम न करिवा इलेक्ट्रॉन बैलेंस डायग्राम न करिवा एंड एट द सेम टाइम and FeS2 the stoichiometric ratio between iron and sulfur should be 1:2 এই রেশিও রে যদি ন রখিবো ইবিডি রে তাহলে এই ফর্মুলা কো তুমি ব্যালেন্স করি পারিবনি তো লেট अस রাইট ডাউন স্টেপ ওয়াইজ অক্সিডেশন স্টেপ রে आयरन +2 এটি এপটে ଅଛି সেপটে आयरन +3 सो केतटा इलेक्ट्रॉन को पटे ऐड होबो yes 1 electron in right side. 1 electron in right side precisely so adds ना कर देला किंतु टोटल चार्ज हे गला एटे -1 +3 +2 एपटे भी +2 चार्ज टा समान हे गला देन आउ गोटे भी अछि एठी सल्फर टा -1 रु जाईची +4 को एठी केतटा इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली ऐड करियो पड़िबो राइट साइड रे बिकॉज़ ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के कहि परिबो आशीष त्रिपाठी आशीष +5 लेफ्ट साइड रे +5 लेफ्ट साइड रे precisely +5 electron +5 plus sorry एटा -5 +4 एपटे हबो -1 सेपटे अछि -1 पांचटा किंतु एठी गुटे पुनी अप्लाई करियो पड़ियो कॉमन सेंस जेहेतु आमे गुटे मॉलिक्यूलर इक्वेशन हैंडल करूछु एटा आयोनिक इक्वेशन नुए आशुतोष इज वेरी फैसिनेटेड बाय आयोनिक इक्वेशन सो जेहेतु एटा आयोनिक इक्वेशन नुए तेणु हमको आयरन और सल्फर रेशियोटा 1:2 रखियो पड़ियो किंतु एठी 1:1 हे गला तेणु जबरदस्त एठी होल इक्वेशन रे 2 मल्टीप्लाई करियो पड़ियो सो दैट आमे गुटे नेट ऑक्सीडेशन स्टेप पाई गुटे स्टेप ता पे गुटे नेट इक्वेशन बार करियो पड़ियो सो Fe2 plus 2s minus 1 gives rise to Fe plus 3 eta 2 plus रे ऑक्सीडेशन नंबर टा आग +2 एटा -1 Fe3 plus 2 सबुतरे गुणिबो भूलिबोनी के कहबो केते इलेक्ट्रॉन हबो अरे बाबू केतेटा इलेक्ट्रॉन हबो हेलो एंड 11 वेलकम one viewer has joined we were desperately searching for viewers from the YouTube because the time I'm sorry to tell that the time schedule has changed from 6:30 to 5:30 many of you might not have known I am sorry for that inconvenience is regretted and you please watch a half an hour discussion very important discussion from the beginning not now you can watch now online live but later on when the class will be over you can immediately watch the first portion ketna electron Sir, 11 11. electron to right side. kete harshita kete koilo Sir, 11 electron. 11 electrons in the right side 85 to 85 पे multiply कले 5 to 10 plus 1 11 so एटा गोटे part गला then reduction let us take up the reduction step reduction is very simple oxygen has undergone change from 0 to -2 I'm sorry 0 to -2 so how many electrons are to be added on which side reduction is the gain of electron yes how many electrons on which side Sir, 2 electron in left side. precisely so this will be -2 this will be also -2 so let us add oxidation step and reduction step and finally cancel the electrons so for that what you have to do you have to multiply this equation by what factor yes प्रणव what factor देखो हर्षिता वर्तमान डोमिनेट कर रहिलानी करो को हर्षिता समस्त हाथ खोलिकरी चेष्टा करो कहबा पई सो दैट
not only you will be more and more smart, also you motivate your instructor more and more. Yes, Sir, in Harshita? the second, sir, Hmm? in the first equation we have to multiply 2, and in the second equation we have to multiply 11. Very good. So kahinki na eti 11 achi, eti 11 re multiply kalo, eti 2 achi, eti 2 re multiply kalo. So that 22 electron get cancelled. So what is the EBD? 2 re multiply kariya ko bhulibani. 2 Fe plus 2 plus 4S minus 1 plus 11 zero marka chlorine, zero type chlorine. 2 Fe3 plus 3. Then 2 2s are 4 plus 4. And how many O minus 2? That is 11 plus 11 O minus 2. So this is our very important EBD. खाली multiply कर देली, add कर देली. I multiplied 2 एथरे 11 एथरे throughout and added up. ताकू आमे चालो देखिबा. आमर दरकार 2 Fe plus 2 4S minus 1. ताले FeS2 रो कोएफिशिएंट केते करिवो? ऑलरेडी आमे 1:2 रेशियो टाको मेंटेन करिचे. तेणु एटी केते कोएफिशिएंट कले FeS2 रही जीवो दीटा Fe plus 2 मिलिवो 4 minus 1 type sulfur हमको चारटा मिलिवो. कोन? Sir, 2. 2. So we multiply here more as पचरिबा जे के वेट करो ने. It is 2. अच्छा डाण पटे देखो. डाण पटे हां 11 टा ऑक्सीजन दरकार बां पटे. त एठी कार कोएफिशिएंट केते करबा? 11 टा 11/2. हाँ मु कहिछि जोठी दरकार पड़िबो फ्रैक्शन करिवो प्रथमे एट द फर्स्ट इंस्टेंस तुम दरकार पड़ले फ्रैक्शन भी करिवो. सो 11/2 विल बी द कोएफिशिएंट फॉर O2. 11 टा दरकार 0 मार्का 0 टाइप ऑक्सीजन. देन +3 वाला ऑक्सीजन हमको दीटा दरकार. ऑलरेडी फार्मूला रे दीटा अछि Fe2O3 रे दीटा +3 मार्का आयरन अछि. किछि करिवा को पड़िबो नाही. चारिटा +4 वाला दरकार. सो एठी 4 गुणिबा को पड़िबो. So that +4 वाला सल्फर चारिटा हमर आसी गला. Then 11 टा -2 वाला एठी ऑलरेडी 3 + 2 8 8 3 11 टा -2 वाला ये भी -2 जे. सो आउ किछि करिवा को पड़िबोनी. ऑक्सीजन एठी 3 टा एठी 4 2 8 टा 8 3 11 टा ऑलरेडी अछि. So it is a balanced equation. Now our job is to eliminate the fraction. So that the whole equation to be multiplied by 2. So ultimately it will be 4 FeS2 plus 11 O2 will give you 2 Fe2O3 plus 8 SO2. Eta kon bosibo kete 4 11 2 8 4 11 2 8 4 11 2 8 4 11 2 8. So तुमको क्विकली आजिकल का जुग होची कंपटीशन जुग. को इक्वेशन को को मेथड अडॉप्ट कले हां तो मने अछि. मना करनी जदि मने अच्छी तबे पकई दियो चेक कर दियो. मु मना करनी घोषिया को मु कहूनी. घोषिले तमरो मोनोटोनस लागिवो सब्जेक्ट ता मोनोटोनस लागिवो. तुम बेसी इन डेप्थ प्रिपरेशन करि परिबोनी. आयुष काई हाटे किजो गुल किछि पचारिवो की. सो बुझी पारलो की बुझी पारलो हाटे को. डोंट बी नाइव. बुझी पारथिवो याडे सर मते टिके आउ थरे बुझेले. सो बाय दैट द लॉस विल बी योर्स. मोर लॉस होबनी. लॉस विल बी योर्स. रियली ना बुझी पारछो मते कहबो. केते पिला बुझुथिबे किंतु दे विल मे बी डेलिबरेटली मे बी दे आर नाइव to the extent that they will try to, they do not know they are spoiling the time of others also. Okay, Ashish बुझिलनी? सर ठीक आओ थोड़ा एक्सप्लेन कर दो. आयुष बुझिलनी? आगे सर बुझिला. आते कि न एटा पर हम क्लोरीन रो बुझेली. द EBD डायग्राम मेथड आई एक्सप्लेन फर्स्ट इन डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्लोरीन. एटा एथरे मल्टीपल ऑक्सीडेशन अछि. आयरन जाईची +2 रु काहे कि ना आसीस तमे सबुडाक जोडाक सब तमे मूलरू अछ किंतु प्रैक्टिस मोस्ट लाइकली टिके करूनो समय मिलुनी. नो डाउट नो प्रॉब्लम. सेति पई जो माने प्रैक्टिस न करिवो टिके धरिबा को प्रॉब्लम हो. मते किंतु आगु बुझिबा को पड़िवो. सो आयरन एठी चेंज हेची +2 रु +3 पुनी सल्फर टा -1 रु +4. सो दीटा जक लिखियो पड़िवो. आयरन लिखिली ता पे गोटे इलेक्ट्रॉन लॉस हला.
आ सल्फर टा -1 रु +4 को गला 5टा इलेक्ट्रॉन लॉस हला किंतु जेहेतु ए फार्मूला रे Fe(S2) फार्मूला रे आयरन आउ सल्फर रो रेशियो 1:2 अछि तेणु एठी दीटा -1 टाइप सल्फर पाइबा पई I had to multiply 2 throughout the equation so that the ratio 2 is 1:2 रहइबो 1:2 रहला वर्तमान देखो 1:2 रहला A2 टा पछरे गुणिले इलेक्ट्रॉन काटिया पई किंतु ता पूर्वरु आयरन आउ सल्फर रो रेशियो 1:2 रही जाइछि ऐड करी करी A2 टा पछरे गुणा हला देन गोटी रिडक्शन होइछि ऑक्सीजन टा 0 रु जाइछि -2 तो बर्तन ऑक्सीजन दीटा इलेक्ट्रॉन नीड कला सो इलेक्ट्रॉन को काटिबा पई एपटे गुणिले 2 रे एपटे गुणिले 11 रे एटा गोटे अष्टम श्रेणी अलजेब्रा कि सप्तम श्रेणी अलजेब्रा if you are not able to comprehend then please repeat the video and you can understand so electron को 22 टा इलेक्ट्रॉन कटि गला परे हमर बाम पटे रहिला 2 Fe+2 2 to the 4 S-1 then 11 0 oxygen 0 and right side रे 2 Fe+3 4 4 S+4 and 11 तळे पटे 11 O-2 तो एटा को देखि करी मु मेन मॉलिक्यूलर इक्वेशन को बैलेंस कली हमर दरकार एथरु दुईटा एथरु चारटा सो Fe(S2) रो कोएफिशिएंट हला 2 हमर ऑक्सीजन दरकार 11टा तेनु O2 अछि O2 तेनु 11/2 हबो O2 रो कोएफिशिएंट राइट साइड रे +3 दरकार आयरन दीटा ऑलरेडी Fe2O3 रे दीटा Fe+3 अछि A2 टा पछरे आसला एठी तेनु किछि करियो को पड़लानी सल्फर +4 वाला तुम निजे कले जानि परिबो चारटा दरकार तेनु एठी 4 रे मल्टीप्लाई कली ऑलरेडी हमें देखिली 11टा -2 वाला ऑक्सीजन हेई सारलानी एठी 3टा एठी 4 2 8 सो 8 + 3 11टा -2 वाला क्लोरीन हेई सारलानी दैट मींस इट इज ए बैलेंस इक्वेशन किंतु एथरे गोटे डिमेरिट हेची एटा गोटे फ्रैक्शन रहिछि टू एलिमिनेट फ्रैक्शन यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 2 सो एटा 4 हे गला एठी फ्रैक्शन टा कटि गला त माने 11 82 88 hela again so I cannot be interested to spend more time at this moment when I am handling a group particularly with those who were with me multiple times class 9 re 8 re 9 re 10 re I don't count how many times anyway तो वर्तमान गोटी जिनस खाली कहबी नहीं सेटा मु परे कहबी एटा जोटा अछि तमे जो पचारिथिलो आयुष सेटा तमे ट्राई करो ईबीडी मेथड रे ट्राई करो हला निजे तुमे निजे ट्राई करो जोटा केते नंबर कहलो 12 नंबर टा ईबीडी मेथड रे ट्राई करो निश्चित भाव रे हबो 12 टा हाँ 12 नहीं 12 नो 12 ना 14 टा पचार दिलो sir 19 P2H4 gives phosphine pH3 and P4H2 सेटा मध्य गोटे डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हला ताकू तमे ईबीडी मेथड रे ऑक्सीडेशन नंबर सेही गोटे फास्फोरस रे बढ़ीची कमीची जेमती क्लोरीन रो 0 रु +5 जाइथिला 0 रु -1 जाइथिला सेही भलिया बुझिलो yes sir तो करिवो आ गोटे इंटरेस्टिंग मेथड तुमको कहबी जो तुमको कहिछि 9th रे कहिछि अल्जेब्राइक मेथड एटा को तुम जे अल्जेब्राइक मेथड रे डील कले आउरी शीघ्र पाइ जे एटा को जोटा मो 11 क्लास पिला को अल्जेब्रा मेथड टा कुए नहीं बट इट्स द वेरी एलिगेंट मेथड I used to tell it in class 9 class 8 9 पिला को कहे अल्जेब्रा मेथड इज very इंटरेस्टिंग एगुडा को कोन फास्फोरस रो फ्रैक्शनल भारिबो एठी फास्फोरस रो -1/2 ना कोन भारिबो हां -1/2 भारिबो एठी -3 भारिबो एठी केते 2x एठी -2 भारिबो इसु भारिबो सो फ्रैक्शनल इलेक्ट्रॉन सु फ्रैक्शनल दबक पड़ियो पुनी फ्रैक्शन एलिमिनेट करी ता अपेक्षा आमे जदि यार कोएफिशिएंट को करबा देखो अल्जेब्रा मेथड तुमको बताउची x एठी धरो y एठी z कि abc गुटे कोन मन इच्छा कोएफिशिएंट नै जी हैला आउ जे कोनसी गोटे कोएफिशिएंट को 1 धरियो से ऑटोमेटिकली अन्य गुडा को फ्रैक्शन आसले आसु काहा को धरिबो जोथरे बेसी एटम थिबो ताकू 1 धरले एटा इजी हे जिवो तुमको करबा तो आ भितरे एठी 4 2 6 टा एठी 4 टा एटम एठी 4 2 6 टा
तो आइदर एटा को 1 x को 1 करि पारो कि z को 1 करिवो कोटा 1 करिवा धरो x टा को 1 करिवा लेट x इज इक्वल टू 1 तमे z इज इक्वल टू 1 भी करिवे चलता करी कि तबे इंडिविजुअल एलिमेंट को बैलेंस करो फास्फोरस बैलेंस फास्फोरस एपटे केते सेपटे गोटे इक्वेशन अलजेब्राइक इक्वेशन बाहर करो 2x एपट साइड रे 2x एपट साइड रे इज इक्वल टू y प्लस 4z गोटे एठी अछि तेनु y into 1 y एठी 4 अछि 4 into z 4z एटा गोटे इक्वेशन 1 हला पुनी हाइड्रोजन बैलेंस जत्ते एलिमेंट अछि इंडिविजुअल सेतक एलिमेंट बैलेंस करिया पड़ियो हाइड्रोजन लेफ्ट साइड रे 4x सो 4x इज इक्वल टू एठी हाइड्रोजन होछि 3y प्लस 2z एठी 3y एठी 2z सो गोटे आमे ऑलरेडी x को 1 नहीं छे सो एटा रिड्यूस हे गला 2 इज इक्वल टू y प्लस z 4z आमे x टा को 1 नहीं छे सो एटा रिड्यूस हे गला 4 इज इक्वल टू 3y प्लस 2z साइमल्टेनियस इक्वेशन तो अष्टम श्रेणी रे पढिचो सो 2 सो y प्लस 4z इज इक्वल टू 2 आ गोटे असला 3y प्लस 2z इज इक्वल टू 4 सो ये दीटा साइमल्टेनियस इक्वेशन करी गोटा को काटी देले हमें कौन पाइबा धरो एटा को 3 रे मल्टीप्लाई करिबा एंड को माइनस माइनस करिबा सो 3y कटि गले एटी 4 3 जा 12z minus 2z so 10z is equal to 3 2 जा 6 6 minus 4 is equal to 2 so z बाहरला 1/5 यदि z बाहरला 1/5 तक मु काले भूल करथिबि तमे करेक्शन कर दियो y टा केते बाहरला ना जे कोन से उटे इक्वेशन नहीं जाओ so y is equal to 4 minus 2z by 3 ए इक्वेशन टा मु नेली so एटी हला 4 z बाहरची 1/5 so minus 2/5 by 3 so केते बाहरला so 5 20 minus 2 18/5 एठी by 3 माने एठी 3 रे गुणा हे गला 18/15 मु ठीक करछु तो देखिलो x टा को 1 नैतिले so 2 is equal to y plus 4z आउ एटा 2 नैतिले 2 2 जा ओड भूल करछि x टा हां 1 नैतिले सर ठीक करछि 4 is equal to 3y plus 2z so y plus 4z is equal to 2 3y plus 2z is equal to 4 so 3 रे मल्टीप्लाई कली एवं माइनस कली 3y कटि गला 4 3 जा 12 minus 2 so 12 2 गले 10z is equal to 83 3 2 जा 6 6 रू 4 गले 2 so z is equal to 1/5 तो एथु गोटे इक्वेशन रे पकई देली गोटे इक्वेशन रे पकईले नर एठी पकईली so y is equal to 4 minus 2z by 3 4 minus 2z भरला 1/5 so 2/5 by 3 so 5 20 20 रु दुगल 18/5 3 हेले 18/15 ठीक अछि तो x होची 1 y होची 18/15 आउ z होची 1/5 हमें एलिमिनेट करिवानी फ्रैक्शन हां सर 18/15 टा को हमें 6/5 लिख करिया केतेला सर 18/15 टा को हमें 6/5 कर दे करे हाँ ताकू आउरी कमी देल हबो 18/15 को 6 रे हरिले 36 18 6 नहीं 3 ना 3 6 जा 18 3 5 जा 15 so 6/5 हे जिवो so this is 6/5 so make it 6/5 yes you're correct then they दियो एठी एक्स्ट्रा भारला 1 so इटा हला P2H4 एठी एक्स्ट्रा 1 ऑलरेडी नहीं छे एठी y भारलानी 6/5 so 6/5 into phosphine PH3 आउ z भारलानी 1/5 into tetraphosphine PO P4H2 so बर्तन 5 रे सबुथरे गुणी देले to eliminate 5 in the denominator so 5 रे गुणी देले हे जीवो 5 P2H4 gives rise to a fraction कटिगला 6 PH3 plus a fraction कटिगला गोटिए P4H2 so भातो हांडी रु गोटे टिपि देले 5 दुणे 10 टा हाइड्रो फास्फोरस 10 टा फास्फोरस लेफ्ट रे एडी 6 + 4 10 5 20 टा हाइड्रोजन 36 18 + 2 20 टा हाइड्रोजन so it is a balanced equation so this is class 8 algebra
So you can handle the a type of equation तुम oxidation number method रे न करी करी तुम्हें algebra method रे भी करी परिबो जो method रे कले भी तुम balance करतुबो के बुझिला हटे को right so algebra method टाकू जो नवम श्रेणी रे हमें पढ़िथिले ताकू पूरा फोपाड़ दबनी into dustbin sometimes it will come to your use particularly when the oxidation numbers are fractional and the number of electrons to be required in the EBD will be also fractional so that a time consuming hobo it xy method रे कर देले आराम रे individual element को balance कर देले हे गला प्रणव किछि असुविधा नाही तमे आउथरे रिवाइज करिवो मु किंतु गोटे नुवा जिंस आज स्टार्ट करिवि प्रतिदिन गोटे गोटे नुवा जिंस स्टार्ट हबो बैलेंसिंग बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड बैलेंसिंग आयोनिक इक्वेशन by ion-electron method. It would completely, and you will know the importance of ionic equation as was being pondered over by Mr. Ayush. So, ये आसिनी पर्यंत खेल रु आसिनी ताको कहि देली खेलटा मते भल लागे ए चलैछि खेल कोन ता नाटी अनुभव एक्सपीरियंस नौछि ता ना अनुभव ही इज टेकिंग अनुभव खेलर एक्सपीरियंस नौछि गुड धर गोटे तार दीटा रूल अछि एसिडिक मीडियम रे गोटे प्रकार रूल बेसिक मीडियम रे आ गोटे प्रकार रूल धर आमे करिबा गोटे आयोनिक इक्वेशन तुम प्रैक्टिस करछ ना नाही मु कहि पारुनी पर्टिकुलरली द न्यू वंस करि दबो प्रैक्टिस मु देछि प्रैक्टिस करिया अल्प अल्प देछि डाइक्रोमेट आयन प्लस H प्लस से फेरस आयन gives rise to chromium 3 plus ion plus Fe3 plus ion plus water एटा तुमको दिया हला किंबा ए दीटा दिया हला नहीं एति की खाली दिया हला एवं ब्रैकेट रे लिखा हला एसिडिक मीडियम ऑटोमेटिकली H प्लस आयन तुम नबा को पड़िबो एंड वाटर टा सब बेले वन ऑफ द प्रोडक्ट्स निश्चय रहिबो H प्लस आयन और OH माइनस आयन यूज हेले वाटर डेफिनेटली इज वन ऑफ द इन्वॉल्व्ड स्पेसीज सेटा राइट रे अधिकांश समय पड़े बेले बेले वाटर टा लेफ्ट रे भी पड़ी पारिबो सेही जिंसटा तमे जदी बाय चांस के मॉलिक्यूलर इक्वेशन रे भूल देइथिबो मुंडो पिटी देले भी बैलेंस हबनी तुम बाध्य होइगिर ताको आयनिक इक्वेशन करिवो निजे पुनी आयन इलेक्ट्रॉन मेथड रे बैलेंसिंग करिकरी जानिबो जे प्रकृति रे वाटर टा राइट रे आसुनी लेफ्ट रे आसुची OH माइनस टा जोडा रिएक्टेंट बोली भाबुतलो सेटा बैलेंस्ड इक्वेशन रे राइट रे आसुची धर किए गोटे दे देछि बाय मिस्टेक किए गोटे देछि कि डेलिबरेटली तुमको फूल करिया को दे देछि तबे मुंडो पिटु था किछि वर्ष तळे सेमति गोटे को स्कूल रे गोटे पिला मानकू तांकर टीचर दे जैथिले एटा कलर रे टिके डिफिकल्ट इक्वेशन टा पिला माने करि पारु ना जिते चेष्टा कले हेलेनी से मते पचारले सर होउनी मु सेटु देखिली ये तांकू पिला को से मास्टर ताकू ये करचंती कोन अप्रैल फूल कर दैछन अप्रैल मास 4 तारिख हला सेटु मु ताकू कहली बाबू ताकू आयोनिक इक्वेशन कल सीधा कर देले आयोनिक इक्वेशन कर देले आरंभ कला आमे जो पढिबा कलाल करी ही से वाटर टा कोन बळुची लेफ्ट रे OH माइनस टा राइट रे एठी कोन उल्टाटा अछि देखिलो सेति पई आयोनिक इक्वेशन रो इंपोर्टेंस टा केते देखो तबे कोन आयन इलेक्ट्रॉन मेथड रे कोन करा जाय सेमति जेमति EBD मेथड रे हमें कले सेमति हमें गोटे ऑक्सीडेशन स्टेप करबा गोटे रिडक्शन स्टेप करबा कोटा आगो करबा कोटा पछ करबा इट इज आवर प्रेरोगेटिव सो लेट अस टेक द रिडक्शन स्टेप फास्ट सो की कहि परिबो को आयन को रिड्यूस हेची देखि कि कहलो तुम एक्सपीरियंस रु मते को आयन वाइज को आयन को रिड्यूस करिछि एंड देन आई विल आस्क यू ए क्वेश्चन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ व्हिच एलिमेंट हैज चेंज्ड फ्रॉम व्हाट स्टेट टू व्हाट स्टेट यस रुद्र खाली गोटे हाथ टेकिले हबो तमे तमे जोना पड़छि तुम आयोनिक इक्वेशंस तमे जो देइथिली प्रथम क्लास रे ताकू तमे जति की देइथिली प्रैक्टिस करिन म अल्प अल्प देइछि त करि दियो ठीक कष्ट हबो
माने कंटिन्यूअसली चलछि गोटे प्रोग्राम सो दैट विल बी द एंड ना 10 days पर तमे कुआडे मु कुआडे अवश्य मु एमती कहली आई एम नॉट स्केयरिंग यू व्हेनेवर यू वांट माय हेल्प आई एम देयर टू हेल्प यू सो रुद्र कहलो सर क्रोमियम टा +6 रु +3 कर डाइक्रोमेट आयन टा हेछि ए डाइक्रोमेट आयन टा क्रोमियम 3+ हेछि तेणु सेटा आमे कॉपी करबा पूरा आयन टा आउ जदि पेंसिल रे किए कहबो ऑक्सीडेशन नंबर देखेबा पई कारण एटा गुटे पॉलीएटॉमिक आयन टा तेणु सेटार एक्चुअल चार्ज अछि पुनी ऑक्सीडेशन नंबर टा फेक चार्ज तेणु सेटा गंडोलिया करिवो एठी हमर फेक चार्ज दरकार नै एक्चुअल चार्ज रो खेळ एटा तेणु जानिबा पई जे पचरिबो एठी कोन हेछि ना एठी एक्स मेथड रे बाहर कले एटा +6 रे अछि एटा प्लस एटा तो निजे मोनो एटॉमिक आयन टा तार ऑक्सीडेशन नंबर जेतिकी तार चार्ज सेतिकी तेणु कौन करिवो ए मेथड रे आयन टा को कॉपी करिवो ये +6 ऑक्सीडेशन नंबर पेंसिल लिखिथबो सो डाइक्रोमेट आयन एपटू कॉपी कलो सेपटू कॉपी कलो क्रोमियम 3+ जहां देछि इक्वेशन सेही अनुसार कॉपी करिवो मन इच्छा किछि कॉपी करिवो तापरे फर्स्ट रूल होछि ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन छड़ा अन्य जो एलिमेंट गुड़ाक अच्छी ताकू इक्वलाइज करिवो by placing a suitable coefficient. Tell me what coefficient I will be putting on which side so that chromium will be balanced. Obviously I have to put here 2 oxygen now hydrogen को छाड़ी दो तापे रूल अप्लाई करिवा किंतु जो अन्य अछि मैंगनीज अछि क्रोमियम जो अन्य एलिमेंट अछि ताकू इक्वलाइज करबा खोले देखिबो एपटे केते अछि दीटा अछि एठी ए फार्मूला रे एठी 2 मल्टीप्लाई कर दला सो क्रोमियम एटम समान हे गला वर्तमान ऑक्सीजन को समान करिया पड़िबो सो रूल नंबर 2 होची ऑक्सीजन जतिक की एक्सेस अछि गोटे पट्टे तार ऑपोजिट साइड रे यू हैव टू ऐड सेम नंबर ऑफ H2O molecules water so 7 oxygen are excess on the left side so you have to add 7 water molecules on the opposite side so that oxygen संख्या समान हे गलानी एपटे 7 oxygen सेपटे 7 oxygen किंतु by doing so hydrogen excess हे गला केतुटा ना 7 2s are 14 so as many number of hydrogen atoms are excess on a particular side you have to add same number of hydrogen ions because this is an acidic medium you will get H plus ions abundantly so 7 2s are 14 hydrogen excess अछि डाहण पटे so बां पटे 14 H plus ion add करो so that हमरो hydrogen balance हे गला अगरु oxygen balance हेछि अगरु क्रोमियम भी balance हेछि तेबे रहिला खाली चार्ज balance जेमति ईबीडी मेथड रे करूतलो सेटा हार फोर्थ स्टेप tell me how many electrons are to be added on which side reduction as you know is the gain of electrons so that the two sides will have equal charge yes आउ कोन के जानि पारलनी रुद्र को सर 6 इलेक्ट्रॉन इन लेफ्ट साइड precisely you need to add 6 electron in the left side काहे की ना डाइक्रोमेट आयन रे समिधा टोटल बुढ़ाटा इंटायर बुढ़ाटार -2 एतेटा एटम अछंती किंतु चार्ज होची -2 आ गोटे H प्लस आयन रो चार्ज होची +1 हेले 14 टा होची +14 आ 6 टा इलेक्ट्रॉन को -6 सो टोटल हला एठी +6 सो आगो देखि देबो एपोटे केते अछि एपोटे हला 2 * +3 दैट इज इक्वल टू +6 एटा न्यूट्रल वाटर टा न्यूट्रल सो डाहण पटे +6 अछि बोली आ एठी अछि +14 एठी इसले +12 तेणु एठी +6 इलेक्ट्रॉन कले +12 - 6 will be +6 एपटे भी +6 so 6 electrons are to be added on the left side एटा तमे कैलकुलेशन करिवो रफ रे करिकरी necessary electrons are to be added so that every wise the reduction step is complete क्रोमियम प्रथमे कले तापरे ऑक्सीजन कले तापरे हाइड्रोजन कले बर्तन चार्ज भी कर दले दिस इज कंप्लीट देन चलो रिडक्शन स्टेप करिवा ए सॉरी ऑक्सीडेशन स्टेप करिवा आगो कर देथिले ए स्टेप टा डजंट मैटर कोटा आगो करिवो कोटा पछ करिवो इट इज योर
प्रेरोगेटिव से ऑक्सीडेशन स्टेप करबा कोन के कहि परिबो ऑक्सीडेशन स्टेप को आयन टा को आयन को हिची को आयन टा को आयन हिची ऑक्सीडेशन. Now let me tell you to the ones who are watching YouTube live, and to you also who will be watching late in the YouTube. That is, our time schedule has changed from 6:30 starting time to 5:30 because of my little bit inconvenience. I had to change the timing, and the participants in the Zoom, they have accepted it. So, and those who will have some time mismanagement or tally doesn't match with our timing, they can watch the video in the YouTube. Oxidation co-ion ta hichi Samida yes co-ion को oxidize करिछि Fe2 हाँ Fe 2 plus or Fe3 plus. এটা কই পারু না হাত টেকিକିରି তবে কোন ইয়ে ଆମ ରାମାୟଣ ନା କୋଉଠି ମହାଭାରତ କୋଉଥିରେ ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅଛି ସେ ପଚାରିଲେ ସେ କେବଳ କହିବ ଏଟା କିଏ କହିଲ ରୁଦ୍ର ସହଦେବ କୋଉ ମହାଭାରତରେ ସହଦେବ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଗୋଟେ ଏମିତି ସିଏ ସେମିତି ବସିଥିବେ ମୌନ ହେଇକିରି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଯେ ପଚାରିବ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତାର ଉତ୍ତର ଦେବେ ସିଏ ଆଗରୁ ପଡ଼ିକି ହାତ ଟେକିକିରି କହିବେନି ସେ ମତେ ଲାଗୁଛି ସମିଧା ତ୍ରିପାଠୀ ସେଇଭଳିଆ ଆଚ୍ଛା ଭଏସ ଶୁଭା ଯାଉଛି ହଁ କଣ सर वॉइस ଶୁଭା ଯାଉଛି ହଁ ଶୁଭା ଯାଉଛି ବହୁତ सर ତ Fe2 plus ହେଇକି Fe3 plus ହଉଛି ହଁ ପରା ମୁଁ ଶୁଣିଲି ସେଇଟା ଶୁଣିଲି ଯେ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲି ପଚାରିଲା ଠୁ ୟୁ ଆର୍ ସେଇଂ ଆଣ୍ଡ ୟୁ ଆର୍ ନଟ୍ ରେଜିଂ ୟୋର ହ୍ୟାଣ୍ଡ କାହିଁକି ତୁମେ ତ ଜାଣିଛ ତୁମେ ହାତ ଟିକିଲେ ୟୋର ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟର ୱିଲ୍ ବି ଫିଲିଂ ହ୍ୟାପି ହାତ ଟିକିଲେ ଆଚ୍ଛା Fe2 plus ଟା Fe3 plus ହେଇଛି ହଁ ଭୁଲ ହେଇଗଲେ ହେଇଯାଉ एंड केतेटा इलेक्ट्रॉन को पटे ऐड करियो पड़ियो एटा ऑक्सीडेशन रे राइट साइड रे इलेक्ट्रॉन ऐड हुए सो दीपट साइड रे चार्ज बैलेंस करियो को हमकु केतेटा इलेक्ट्रॉन ऐड करियो पड़ियो राइट साइड रे 1 इलेक्ट्रॉन राइट साइड रे गोटे इलेक्ट्रॉन सो +3 -1 एपट भी +2 सेपट भी +2 देन ऐड करो ऐड करिकरी इलेक्ट्रॉन काटो जेमति इबिड रे काटुथलो सो एटी 6 रे मल्टीप्लाई करियो पड़ियो सो 6 इलेक्ट्रॉन get cancelled then finally you get eta EBD no finally balanced ionic equation will be ready to solve so Cr2O7 2 minus plus 14H plus 6 Fe2 plus सब तो reactant हमें साथ देले then 2 Cr3 plus 86 रे गुणिया को भूलिबनी 6 Fe3 plus 7 water so final equation हला एटा so एटा को तुम हीट एंड ट्रायल मेथड रे कोन करि परथां तो केबे नो हां ओएन मेथड रे करि परथां इवन आयोनिक इक्वेशन टाको मध्ये ओएन मेथड रे करि दबो किंतु आई ऑलवेज रेकमेंड टू गो फॉर अनदर आयन इलेक्ट्रॉन मेथड अप्लाई कलो बेटर कारण सेठी फेक चार्ज पनि दबा को पड़ियो बाय चांस कंफ्यूजन हे गला एक्चुअल चार्ज टाको काटि देलो फेक चार्ज टा रखिचो त अल्टीमेट इक्वेशन गंडोलिया हे तेणु एटी फेक चार्ज नहीं एक्चुअल चार्ज देकर तुम आयन इलेक्ट्रॉन मेथड रे करो इलेक्ट्रॉन बैलेंस डायग्राम मेथड रे करो अवश्य क्रोमियम बैलेंस करिवो सो मु रूल टा लिखि दोउची एसिडिक मीडियम रे आ बेसिक मीडियम आज करी हबनी एक रे इक्वलाइज एलिमेंट अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन टू रे equalize oxygen by adding H2O जो पटे एक्सेस अछि तार ऑपोजिट साइड रे इट इज अंडरस्टूड जो पटे एक्सेस थिबो जेतेटा ऑक्सीजन तार ऑपोजिट साइड रे सेतिटा मल्टीप्लाई करी सेटा मु लेखुनी 3 रे इक्वलाइज हाइड्रोजन by adding H plus ion obviously जो पटे एक्सेस अछि तार ऑपोजिट साइड रे ऐड करिवो H plus ion then equalization of charge by adding electron बस तापर ऐड कर दियो इलेक्ट्रॉन को काट दियो बस लगा सो
मु तुमको देखौची मु तुमको अनफॉर्चुनेटली 1.5 घंटा पढ़ी थे था कर दी थांती आउ असाइनमेंट रे जोटी एसिडिक मीडियम देखा लेखा हिची जो जानिकरी मु कौन करिची ना एठी देइनी एठी H प्लस आयन देइनी को पटे कि वाटर देइनी को पटे तुमको ऑटोमेटिकली रूल अनुसार पाइबो एटा करिवनी एटा OH माइनस जोटा थिबो सेटा बेसिक सॉल्यूशन रे तार नियम अलगा ता करिवनी एटा H प्लस आयन देखुछ एटा एसिडिक एटा करिवो थर्ड टा करिवो फोर्थ टा करिवनी OH माइनस अछि फिफ्थ टा करिवो एठी H प्लस अछि सिक्स्थ टा करिवो सेवेंथ रे किछि दरकार नै एटा कर दबो सेही एका रूल एका एसिडिक मीडियम रो रूल किंतु हाइड्रोजन तो नाही ऑक्सीजन नाही तेनु सल्फर टा को समान कर देले ऑक्सीजन केवल अछि किंतु 2 रे गुण देले से समान हे जिवो तो ऑक्सीजन दे समान हे गला आ वाटर भी एडिशन दरकार नाही किछि दरकार नाही खाली इक्वलाइजेशन ऑफ चार्ज कर देले हे गला एटा करिवो ए अल्कालाइन मीडियम लेखा हिची एटा करिवोनी एटा ऑटोमेटिकली हे जिवो एटा करिवो एक्स्ट्रा एटा H प्लस आयन अछि एटा करिवो जोटी OH माइनस आयन थिबो किबा लेखा हिची थिबो बेसिक मीडियम करिवोनी एटा करिवोनी एटा करिवो एटा करिवो एटा अल्कालाइन मीडियम अछि करिवोनी एटा H प्लस आयन अछि करिवो बस एतिकी ए सॉल्यूशन टा मु परे देबी तो मते पचारु न के पचारु न हे जाउ सब अब तेणु पचार नई निबे मु किन मो तरफ पठे दउची so this finishes our program our basic medium रे मु जदी पढे देबी it will be little hodgepodge little or rather I would prefer that you should take up another एटाकू ना तुम घरे कर आ गोटे सहजटा एटा आमे करि परिबा एटा से देइछि एसिडिक मीडियम बिल देइ देइछि देखो ऑटोमेटिकली कौन करिवो अच्छा प्रथमे हम धर हम मु कहबी एटा देखिकरी कहिला कोउटा ऑक्सीडाइज हेछि केतेरु केते को जाइछि देखिकरी को और एल्स तमे पेंसिल धरिकरी बाहर करि परिबो रिडक्शन तो आखि को जळ जळ करी देखा जाउछि एफिटा +3 रु +2 को जाइछि रिडक्शन टा देखा जाउछि माने ऑक्सीडेशन टा ऑटोमेटिकली जाना पड़ जिवो से रुद्र कहलो सर ऑक्सीजन टा कि पेरोक्साइड होचे -1 में 0 ऑक्सीजन टा एठी पेरोक्साइड एटा हाइड्रोजन पेरोक्साइड रे -1 जो व्यतिक्रम थिला एक्सेप्शन -1 एंड इज 0 सो तालो सेटा को हमें नबा हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज ए लिक्विड तेणु सेटा कटिनी आयोनाइज हेइनी तेणु सेटा रहिबो वाटर टा ऑटोमेटिकली आसीबो देखो केमति आसीबो तो लिखिबा ऑक्सीडेशन स्टेप टा आगो करिबा धरो सो H2O2 एपटे से हेइची कोन ना ऑक्सीजन हेइची एपटे ऑक्सीजन ए दीटा देखो न्यूट्रल केही आयन नुहंती H2O2 न्यूट्रल O2 भी न्यूट्रल डजंट मैटर ऑक्सीजन समान अछि एक नंबर नियम नाही हाइड्रोजन ऑक्सीजन छडा थर्ड एलिमेंट नाही तेणु एक नंबर नियम लागू हेलानी 2 नंबर नियम लागू हेलानी कारण ऑक्सीजन समान अछि एपटे भी दुईटा सेपटे दुईटा यदि असमान थिबो डिफरेंट थिबो एंड एक्सेस गोटे पटे थिबो से एक्सेस नंबर ऑफ ऑक्सीजन जति थिबो सेतिटा वाटर ऐड करिवो अपोजिट एटी तो एक्सेस नाही समान थर्ड स्टेप को डायरेक्टली आसीबो हाइड्रोजन दीटा एक्सेस अछि केते ऐड करिवो ना दीटा H प्लस आयन ऐड करिवो देन इक्वलाइजेशन ऑफ चार्ज फोर्थ स्टेप को आसलो केतेटा इलेक्ट्रॉन ऐड करिवो कितना इलेक्ट्रॉन सीजल ऐड करिवो सीजल सर राइट साइड रे दीटा तमे भी सही सहदेव कैटेगरी रो राइट साइड रे दीटा इलेक्ट्रॉन हेले +2 -2 0 हो गला एपटे भी 0 सेपटे भी 0 एटा 0 हो गला सो ऑक्सीडेशन सरी गला रिडक्शन टा आउरी सहज एटा गोटे सहजिया नेली एफिटा +3 रु +2 को जाइछि एटा किछि करिवार नाही ना एक नंबर ना 2 नंबर ना 3 नंबर किछि रूल नाही खाली इलेक्ट्रॉन बैलेंस डायग्राम भरिया बैलेंसिंग चार्ज इक्वलाइजेशन ऑफ चार्ज केते इलेक्ट्रॉन ऐड करिवे
कौन सुजल कुह कि गोटे कह हर्षिता शोई पड़लुनि कि No, sir. कौन Sir, one electron in one left electron side. in left side. Very good. So एपटे भी +2 सेपटे +2. Then आम इलेक्ट्रॉन को काटिबा. So it is 2 अच्छी, it is 1 अच्छी. The whole equation of the reduction step is to be multiplied by 2. 2 electron get cancelled. So it is S2O2 plus 2 Fe plus 3 gives rise to O2. এটা সহজ এটা O2 plus 2H plus 2 रे गुणिया को भूलिबनी बरं सेति पे मु कहे एठी काटी देकरी 2 2 2 सब कर दबन ने पिला भूली जांती 2 Fe 2 plus. So this is the final balanced ionic equation. तेणु एठी वाटर आसिला नाही. Very interestingly water एठी आसिला नाही. फिर भी equation is balanced. S plus ion आसिला किंतु एठी वाटर आसिला नहीं कारण H2O2 रे हाइड्रोजन अछि से बैलेंस कर देला एठी दीटा हाइड्रोजन एठी भी दीटा हाइड्रोजन. So it is balanced both element wise, charge wise also balanced. So that's the end of today's program. तुमे सेतक जतक देइछि सेतक करिवो and I think I'll not be okay. I might give you a or I might not give you a prize question now, but while I return back in the night before I sleep, I will give you a prize question, and tomorrow morning you will watch it. The sooner you watch, the sooner you send me. Bye. Bye-bye. Sorry for the inconvenience in time, schedule change, and leaving little earlier than expected. Bye-bye. Any question? Thank you, sir. Thank you, sir. Pranam. Thank you, sir. Namaste.